गुड इवनिंग जी। आज हम डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन मुस्लिम वर्ल्ड ये टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस बोथ फॉर करंट अफेयर्स भी है एज वेल एज ऐसे के लिए भी है कि ऐसे अगर आपको कोई डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन पे आ जाता है या इवन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन पे आ जाता है या ओवरऑल मुस्लिम कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके लिए भी आपको जो कंटेंट है और जो आइडियाज और आर्गुमेंट्स हैं वो भी आपके डेवलप हो जाएंगे इस टॉपिक से। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो एक करंट अफेयर का 20 नंबर का सवाल भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। सो पर्पस आज का काफ़ी लेंथी टॉपिक होगा। मेनली पर्पस हम एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी कर रहे हैं और एक टॉपिक के आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स के टॉपिक मैं कैसे तैयार करवाता हूँ। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन मुस्लिम वर्ल्ड। Now the point to ponder is that why to study democratic transition in Muslim world. Ironically, you would not come across any scholarship. Scholarship means any academic writing on Muslim world pertaining to democratic transition. You would not come across. There are number of studies pertaining to democratic transition, but bulk of the studies they generally are related to southern Europe, South America, post communist Eastern Europe. These are the studies which you would come across. Namely, like you would come across a renowned book named Transition from Authoritarian Rule. From Authoritarian Rule. This is the work of Lawrence Whitehead. It is related to Southern Europe. There is another study related to democratic transition, and that is Problems of Democratic Transition. This is study by Jon J. Linz. It focuses largely on South American areas. And then you would also come across, not directly, but indirectly, you would come across democratic transition of the post-communist Eastern Europe by Samuel P. Huntington as well. Related to post-communist Europe in the form of articles. No scholarship or authentic study on democratic transition in Muslim world in the 20th century specifically. And especially in the case of Samuel P. Huntington, he outrightly rejects any, his specific phrases that how Islam
impede democratization. A specific work, and in that work he states, in Islam, God is Caesar. So this amply shows that what is the mindset of Western scholarship, that they have the assumption that democratic transition is impossible in Muslim world. However, when we say why to study, the reason so is that one can witness a peaceful transition of democracy in Muslim world, particularly in the last 2 decades. Sorry. For example, major manifestations like Tunisia, Indonesia, major examples, Senegal, and up to some extent, a peaceful transition, although not up to the mark, but as far as in terms of uh, you know electoral process, one can witness it in Pakistan as well. There are more than 50 Muslim majority areas, majority territories across the globe. There are a few countries where Muslims are in, there, a lot of population of Muslims are there, like in the case of India, but we are referring to the Muslim majority uh, territories. But unfortunately, there are very few examples. If we see the democracy index, so you would come across no Muslim country as a full democracy. You would come across 3 to 4 Muslim countries in the headers of flawed democracy. You would come across bulk of Muslim countries in hybrid democracy, and nearly all Middle Eastern and North Africans except Tunisia in authoritarian rule. So probably that's the reason that since democracy index suggests that there is no hope for democracy because either they are flawed, hybrid, or there are authoritarian rule. And that's why there is a conception across the globe that it is nearly impossible that there would be any democratic transition in Muslim world. But it's not the case. We will evaluate in detail that what are the hurdles, what are the problems, and if there are certain case studies pertaining to democratic transition in Muslim world. But first of all, we must be very much clear about that what is meant by democratic transition. We must very much be clear about it. So democratic transition, the key ideas of democratic transition, the first and the foremost is that there must be a sufficient agreement on procedure to produce an elected government. There must be a procedure, and that procedure must be agreed upon by the all political
groups within that Muslim or overall country. Second, government that would comes into power as a result of free elections. Okay, quite simple, no problem. Number three, government in possession, जिसकी government है, that government should generate new policies. It must not be borrowed idea or borrowed policies of others. And the last, I am writing last here at the D point. And the last one, the legislative powers are not shared with any other body or institution. So these are the four key ideas through which you can understand that what is meant by democratic transition. This is very important when you are trying to uh, sort it out that why there is no democratic transition, why major scholarship is skeptical towards uh, this evolution of this idea in Muslim countries. So these are the four key ideas. Now we will going to discuss the guiding principles of democratic transition. In the first instance, we make a case study that why to study democratic transition in Muslim world. And now we will go towards the second main argument. What are the guiding principles of democratic transition? I personally believe that if you are you have confronted any essay and you want to write, unless and until you don't have proper ideas in your mind under your belt, जमहूरियत का रुझान कैसे बढ़ सकता है, तो उसके प्रिंसिपल्स के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ाना है, जेनेरिक बातें नहीं करनी. So the guiding principles of democracy, there are four guiding principles. One by one, we will work on it. Four guiding principles. The first principle that is known as cross-party participation. The first principle, or you can write it like this, first principle. ठीक है? Cross-party participation. Cross-party participation, one can witness number of examples of cross-party participation in Muslim countries, like in Central Asian republics. In the case of Egypt, immediately after Hosni Mubarak resigned and exiled. Then for a short term in Libya as well. This cross-party participation was also witnessed in the case of Pakistan, particularly deciding the issue of war on terror. All parties conferences were held. Excellent example of Indonesia and Iraq immediately after the Iraq war, when a coalition-based government was formed. So the very basic idea or the principle of democratic transition, that there must be a cross-party participation, either a particular party is in rule or not, but you would engage in the process of all parties conferences,
other patterns of dialogues to engage all. It's not a coalition based government, but rather it's an idea that would generate a sorry, coalition, coalition, building pluralism. So if this first principle इसको आप इस्तेमाल करेंगे effectively, so it would result into a coalition building pluralism. So pluralism क्रॉस पार्टी पार्टिसिपेशन से होना है. सो उसकी हमें थोड़ी थोड़ी मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं मुस्लिम कंट्रीज में. सेकंड प्रिंसिपल. Now the second principle, as far as guiding principles of democratic transition is concerned, and that is consensus building. Consensus building. Now, what is consensus building? Consensus building refers to that it is not mandatory that you would pass laws only through legislature. Not necessarily. Because few parties, maybe they are not part of the legislative house, they have lost elections or they have boycotted elections, they are not part of the legislature. So therefore, all political parties, उनको आप ऑन बोर्ड लें, चाहे वो पार्लियामेंट में है या नहीं है. Merely a majoritarian democracy cannot provide adequate framework of consensus. So as we discussed earlier, that all parties conferences is an excellent example. So consensus building is required. There are consensus there are cross-party participations, but as far as consensus building is concerned, the one can witness that democracy, either a flawed or hybrid or whatsoever type of democracy in Muslim world, there is largely intolerance and consensus building pertaining to policy making. इसमें थोड़ा सा नजर आता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में इसकी कोई आइडियल एग्जांपल्स मौजूद नहीं है. यहाँ प्रॉब्लम है. ठीक है जी. Now we'll come towards the third principle, and third principle of democratic transition उसको कहते हैं crisis management through dialogue and compromises. Normally होता क्या है कि जनाब पॉलिटिकल एक्टर्स वो जनाब डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, डेड लॉक हो जाता है. तो ऐसे इशू में फिर आपको डायलॉग या कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं. द क्वेश्चन इज क्या पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल एक्टर्स कंप्रोमाइज कर सकते हैं? सो यू हैव एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. US Constitution is a classical example of compromises, not dialogues. The delegates compromised over various aspects of that how federation would work. So yes, it is very much possible. But unfortunately, ये crisis management through dialogue and compromises भी Muslim world में all together ये हमें इसकी problem नजर आती है. And then the fourth principle, उसका नाम ही है principle of inclusion. Principle of inclusion. There are various
स्प्लिंटर ग्रुप्स, नाराज ग्रुप्स, जो कि कंट्री, अगर मुस्लिम कंट्रीज लेट से हम कह लेते हैं उसमें कई ग्रुप नाराज ग्रुप होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते, एजिटेशन नहीं करते, कई जगहों पे हथियार उठा लेते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन वो आपको सजेस्ट करते हैं कि ऐसे ग्रुप्स को पॉलिटिकल प्रोसेस में उनके इंक्लूजन बनाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये भी मुस्लिम वर्ल्ड में बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जैसे अफगान तालिबान, अफगान गवर्नमेंट नहीं जो है वो उनके साथ उनको पॉलिटिकल एक्टर के तौर पर रिकॉग्नाइज करना चाहती। इवन यूएस ने डील कर ली 2020 में, लेकिन अफगान गवर्नमेंट अभी भी रिलक्टेंट है, जिसकी वजह से पीस प्रोसेस इफेक्टिव नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ भी इस तरह की एग्जाम्पल हैं और भी मुस्लिम वर्ल्ड में एग्जाम्पल हैं। सो जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, उसमें कुछ जगहों पर हमें क्रॉस पार्टी पार्टिसिपेशन, और वो भी कभी कभी अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के, वो हमें नजर आता है। अदरवाइज हमें बाकी कंसेंसस बिल्डिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, ये मुकम्मल तौर पर हमें इनका फुकदान नजर आता है। सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, प्रिंसिपल्स इसके, इनमें काफी प्रॉब्लम। दैट्स वाई वेस्ट को लगता है कि जनाब इनके यहाँ तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। अभी उसको तोड़ेंगे भी हम इस आइडिया को, भी वेस्ट को गलत लगता है। नाउ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन तो चलो हम एक लम्हे के लिए अज्यूम कर लें कि नहीं है, ओके, इसको आइडिया को ही डेड करते हैं फॉर इंस्टेंस। लेकिन चले हम फिर ये देख लेते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, उनको देख लेते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। एक लम्हे के लिए अज्यूम कर लें डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन तो एक रुझान है, एक पूरा निजाम, उसके प्रिंसिपल्स क्या, क्या मुस्लिम वर्ल्ड में वो फिट इन होते हैं, नहीं होते। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम वो है जनाब अ डेमोक्रेटिक सिविल स्टेट। अब सिविल स्टेट क्या है? सिविल स्टेट है जिसकी डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी हो, एक पार्टिसिपेटरी कॉन्टेक्स्ट, रिपब्लिकन कल्चर हो, वो कहलाएगी एक सिविल डेमोक्रेटिक सिविल स्टेट। So we can easily question that very few Muslim countries वो इस प्रिंसिपल पर पूरा उतरती हैं। Either there would be no republican culture or there would be no participatory culture. कहीं क्या मसला नजर आता। Very few examples that a Muslim country can be labeled termed as a democratically civil state. Second principle of a political system that are the fundamental rights. Fundamental rights. When we say fundamental rights of the people, of course, not of the state or the political parties. The fundamental rights कौन से? जनाब एजुकेशन, फ्री एजुकेशन है नहीं,
जनाब, right to live effective है नहीं? Freedoms. Now, when we say freedoms, so that would be freedom of expression, freedom of speech, freedom, religious freedom, all encompassing ideas of freedoms. वो इंश्योर हैं कि नहीं? और of course freedom of belief वो इसके साथ religious freedom के साथ ही हो जाए. Then what about gender? Gender equality. If you are not okay with the idea of gender equality, gender empowerment है नहीं? Pluralistic tendency of society है नहीं? So fundamental rights we often हमें नजर आते हैं कि they are neglected in Muslim countries largely. You can give examples, particularly that of Egypt, classical example, particularly under General Sisi in the 21st century, and in the 20th century. You can name number of uh, authoritarian regimes in Muslim countries. It's in Iraq, or it's again Egypt, it's Libya, it's Syria, Kingdom of Saudi Arabia, even today Kingdom of Saudi Arabia. So name it, number of. You will not come across that fundamental rights of the people are assured. Then the third principle, that is mutual accommodation. Mutual accommodation. This principle is especially, we are writing it in context of Muslim world. There is a divergence in Muslim world that Islam and democracy, can we link them or they are opposing? So the question that can fundamentals of democracy and principles of Islam, can they coexist? Can there be any idea of twin toleration in Muslim world? Very few examples. Indonesia is an example. In Tunisia is an example. But largely there are violations that no, they cannot coexist. Like Syria. In 1973, a very secular constitution was introduced in Syria. Same is the case in Egypt. 2014, General Sisi introduced such policies just to corner all sorts of religious packages, no interference in system. Side pe jao. So in the case of Muslim world, this mutual accommodation. Of course, there is no violation in the case of Pakistan, but Pakistan is also not a valid example, because yes, we have tried to establish that connection between Islam and democracy through objectives resolution, but in practice, in our society, ये चीज हमें नजर नहीं आती है. यहाँ तो सोसाइटी में एक क्लियर कट डाइवर्जेंस जो है वो मौजूद है. सो जनाब फोर्थ प्रिंसिपल फिर fourth principle is known as democratization theory,
What is meant by democratization theory? Democratization theory, yeah, that an anti-regime coalition by all political forces, ये भी अगेन यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. तो yes, you would come across number of examples whereby the political parties, they join hands against a regime, an undemocratic regime. You would come across, for instance, Charter of Democracy in the case of Pakistan, very relevant example. Then in the case of Tunisia, Ennahda, the political party, against Ben Ali, who ruled 44 years in Tunisia. All the groups join hands, secular, Islamist, all join hands in Tunisia. Same thing happened in Indonesia as well. In 1998, when all political forces they join hand against the 36 years dictatorship rule of President Suharto. So yes, it's possible. ऐसा हुआ है. But the intention factor, वो बड़ा प्रॉब्लमैटिक रहा है. ये इसको सस्टेन नहीं कर पाए. इवन इन टुडेज ट्यूनीसिया सेकुलर और इस्लामिस्ट फोर्सेस के दरमियान इख्तलाफ बनना शुरू हुए. तो ये शॉर्ट टर्म अलायंस के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं. स्लोगन डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी का ले रहे होते हैं, बट अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो है मूव कर रहे होते हैं. इस डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी का सेकंड एस्पेक्ट वो भी बड़ा मजेदार है. एंड सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस democratization theory is a gradual ideological and political moderation. कि हम एक एंटी रेजिम कोलिशन नहीं बनाते. हम सोसाइटी में स्लोली एंड ग्रेजुअली लेट द पीपल उनको ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं. एक स्लो एंड ग्रेजुअल पॉलिटिकल modernization, a gradual ideological and political modernization. Unfortunately, you would not come across any example other than Tunisia in Muslim world. Muslim world को जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए होती है. ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस में बिलीव नहीं कर रहे होते. और इवन अगर कहीं पर कोई जमहूरियत आ भी जाती है तो उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लग जाती हैं. And the third, which is most important, democracy without democrats, question mark. Democratization theory, the urge for democratization in Muslim world. कई मुस्लिम वर्ल्ड डेमोक्रेसीज हैं, फुल नहीं है तो फ्लॉड हैं, लेकिन हाइब्रिड हैं, लेकिन डेमोक्रेसी तो है. ठीक है, वेस्टर्न डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती, लेकिन है तो सही. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऐसी डेमोक्रेसी में भी विदाउट डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेसी इज विदाउट डेमोक्रेट्स, tribalism, biradari politics, etc. You would not come across such themes in Western democracies. The people who are elected, they are not committed to their democracy. Rather, they are committed to their biradari, to their tribe, or to the future of their
political existence, no commitment towards democratic spirit. And the last principle that would happen to be the fourth, this was fourth, and now the fifth one. The last principle, civil society. Civil society. Ingredients of a civil society, an ideal civil society. The first stage, that is cognition. Second is opportunities. And third is political consciousness. Cognitive skills of a society, वो सामने आ रहे होते हैं out of your education model and the environment जो कि स्टेट बना के देती है. सो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं कि ऐसे कॉग्निटिव स्किल्स आपको मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं मिलते. अगर कहीं है भी तो वहां डेमोक्रेसी नहीं. सो हमें तो डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में देखना. अपॉर्चुनिटीज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रोजगार के मौके लोगों के लिए, क्योंकि लोग काम करेंगे तो वो इफेक्टिव सिटीजन बनते हैं. डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, मेक श्योर कॉग्निटिव माइंड एंड वर्किंग माइंड वो ही इफेक्टिव पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस रखता है. Check out the higher education level in Muslim world. Not so good. Higher education. Check out the efforts in research and development. Not so good. Check out the unemployment, or you to say undocumented economy, informal economy. You would come across this high rate in Muslim world. Largely undemocratic leadership, engaged people in consumerism, in individualism. हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है. सो ऐसी कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पीपल की, उसमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं बनती. सो यस, व्हेन वेस्टर्न स्कॉलर्स से दैट डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती मुस्लिम वर्ल्ड में, ये तो वैसे ही अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर है. और देखें जी, जो प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के, वो भी हमें इफेक्टिव नजर नहीं आते. और देखें जी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम भी पूरे का पूरा, उसके की प्रिंसिपल्स हमें मुस्लिम वर्ल्ड में इफेक्टिवली इंश्योर नजर नहीं आते. तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों नहीं मुस्लिम वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो पाई? Hurdles in the path of democratic transition, particularly in Muslim countries. क्यों नहीं? So now when you would write those hurdles, तो गप्पे नहीं मारनी कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आ तो एब्सेंस ऑफ ये तो फलाना तो वो तो जनाब इलेक्शन नहीं हुए टाइम पे तो जनाब मिलिट्री रूलर आ गए तो ये हो गया तो वो हो गया. ऐसा नहीं करना. When you are टारगेटिंग अ टॉपिक, तो उसी में रहते हुए, उसके आइडियाज में रहते हुए ही आपने अपने सवाल को, अपने ऐसे को लेके चलना है, तब उसने आपको अप्रिशिएट करना. जो स्कॉलरशिप बता गई हुई है, अपने पास से अजीम एनालिसिस नहीं देनी. सो द मेजर हर्डल वो तो आपको मिलता है जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम. नाउ ये कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम
ये रिफ्लेक्ट होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर से, नेचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। ये विजडम रिफ्लेक्ट होता है कि आप उसको कितना वो रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके साथ आप एक्सपेरिमेंटेशंस कितने कर चुके हैं। अगर बहुत ज्यादा आप अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम लो है। एंड मुस्लिम कंट्रीज की तो कोई 2-3 एग्जांपल दे दें कि जहां कॉन्स्टिट्यूशंस के जरिए ही तो कंट्रोल किया जाता है उन वॉइसेस को जो आपके हक में नहीं है। इवन मोस्ट रिसेंटली टर्की में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की गई, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आया। तो जब उसको स्कॉलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन देखते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत बात की आपने, आपने अपने रूल के लिए, सोसाइटी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए किया, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो होती है जो पीपल को सर्व कर रही हो, ना वो कि वो एक सिलेक्टेड कम्युनिटी को सर्व कर रही है। और यही एलिगेशन फिर पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट पे भी लगाया जाता है, क्योंकि जो सरफेस पे 18th अमेंडमेंट दिखाई जाती है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और जनाब क्या बात, अंदर उसके ऐसी प्रोविजंस छुपी हुई हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम के साथ क्लैश कर जाती हैं। आज हमारा टॉपिक नहीं है, होपफुली मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अनकरीब 18th अमेंडमेंट पे भी अपलोड करूंगा, बट जेन में रखिएगा कि हम कोई 18th अमेंडमेंट की उसमें तारीफों के पुल नहीं बांधेंगे, हम उसको बड़ा क्रिटिकली देखेंगे, क्योंकि बहुत वायलेशंस और बहुत प्रॉब्लम्स हैं उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको टोटली आप रिप्लेस करें, लेकिन उस पर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। खैर, तो एक तो ये बहुत बड़ा हर्डल है, आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम का ना होना, ये एक इशू। दूसरा बड़ा जो हर्डल है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। व्हेन वी से कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, so it refers to the political culture and political actors. Constitutional wisdom कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट से डेवलप होती है। पॉलिटिकल कल्चर स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, सॉरी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम भी आपका, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन भी हेल्दी। पॉलिटिकल एक्टर्स अनफॉर्चुनेटली ये बिलीव करते हैं पावर पॉलिटिक्स में, मुस्लिम वर्ल्ड में। हालांकि पॉलिटिक्स इज टू सर्व पीपल, not to gain power. So political actors power politics करते हैं, resultantly political culture effective healthy नहीं रहता, political psychology of the political actors problematic, और वो फिर reflect होती है फिर कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाली तब्दीलियां, अपनी मर्जी की चीजें डालने की कोशिश, तो उससे प्रॉब्लम होती है। देन मुस्लिम वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ा हर्डल in the path of democratic transition, and that is nearly in all Muslim countries, the purist versus the pluralist. The purist versus the pluralist. They are poles apart. एक एग्जाम्पल स्पेसिफिक, इजिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट मोर्सी, व्हाई ही फेल्ड, तो बड़ा इलेक्शन जीत के आया, एक प्रो इस्लामिक एजेंडा भी था। इशू ये हुआ कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपकी जो जो लीडरशिप है, वो तो सारी प्योरिस्ट कैंप से आ गई,
बट आपकी ब्यूरोक्रेसी वो हुस्न मुबारक के दौर की उसी वक्त की मौजूद थी, जो कि स्केप्टिकल थे, स्केप्टिकल टूवर्ड्स प्योरिस्ट्स। तो ब्यूरोक्रेसी स्टॉप फंक्शनिंग, रिजल्ट ही नहीं प्रोड्यूस कर सकी मोर्सी एडमिनिस्ट्रेशन। और वही ब्यूरोक्रेसी, वही लोग अंडर प्रेसिडेंट सीसी वो काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। बेहतरीन मतलब कि चलो, लेकिन पहले दे जस्ट लिटरली स्टॉप वर्किंग। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्योरिस्ट वर्सेस द प्लोरिस्ट। हम पाकिस्तान में इस तरह की किसी रिलीजियस डिवाइडिंग लाइन में तो नहीं है, लेकिन हमारे प्रोविंसेस में इससे मिलता जुलता गेम नजर आता है हमें। फॉर इंस्टेंस इन सिंध, bulk of the people associated with the district administration in major urban cities like Karachi, तो वो जनाब they have strong affinities with MQM, और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वो पीपल्स पार्टी। सो बेसिक म्यूनिसिपल लेवल पर, कमिटीज लेवल पर, यूनियन लेवल पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम, गटर बंद है, सफाइयां नहीं है, ये नहीं है, वो हर चीज जाके कोई लेजिस्लेटर ने तो नहीं करनी। सो यस, हमारे यहाँ वो प्योरिस्ट और प्लुरलिस्ट की इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमारे प्रोविंसेस में ये इश्यूज मौजूद हैं। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का ये कॉन्टेक्स्ट, ये हर्डल बहुत खतरनाक है ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड हमारे यहाँ। और इससे भी खतरनाक चीज, हर्डल, दैट इज सिविल मिलिट्री relations. You would come across ke we are talking, we are discussing, we are trying to understand the idea of democratic transition in Muslim world, और हम उसी में रहते हुए अपना आइडिया डेवलप कर रहे हैं। If we would confront any essay related to evolution of democracy, democratic transition, process of democracy, name it like this, तो we would have ample ideas and arguments कि जो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात चलेगी हमारी। हम जनरलाइज्ड और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम उस स्पेसिफिक आइडिया से रिलेटेड उसके जार्गन्स और उसके उसमें रहते हुए बात करें। वरना तो अभी मैं लिख दूं हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन पाकिस्तान, आप सब लोग 20-20, 25-25 हेडर बना देंगे, बट ऐसे नहीं करना। उसी को रिलेशनिंग में चलना है जो उस टॉपिक, रिस्पेक्ट द आइडिया, रिस्पेक्ट द टॉपिक। सिविल मिलिट्री रिलेशंस, सो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट तो हमें नजर आता है कि देयर आर सर्टेन हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरीज इन मुस्लिम वर्ल्ड कि वेयर बाय डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के रास्ते की रुकावट ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस का इम्बैलेंस है। नजर आता है हमें, आप एग्जांपल दे सकते हैं टर्की के मिलिट्री को भी, पाकिस्तान में भी सिविल मिलिट्री रिलेशंस के इश्यूज पास्ट के ओके नजर आते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। बट इस सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का फायदा फिर एक्सटर्नल एलिमेंट्स लेते हैं। मेक श्योर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमेशा उन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ज्यादा बेहतर वर्किंग रिलेशन उसके बन पाते हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं होते। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लार्जली उन्हीं कंट्रीज को ज्यादा सपोर्ट करता है। सेम इज द केस, हम यूएस को नहीं कह रहे, सेम इज द केस कोल्ड वॉर का, यूएसएसआर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, एंड इवन सेम लेवल ऑफ एक्विजिशन एंड्रू स्मॉल एंड माइकल कुगलमैन चाइना पे भी लगाते हैं जी कि चाइना भी
अनइवन फील करता है डेमोक्रेसीज के साथ बात करने में, सो वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ ज्यादा या अनडेमोक्रेटिक लीडरशिप के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। सो हासिल बहस ये कि कोई भी बड़ी पावर, चाहे वो हमें अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, वो तमाम बड़ी पावर्स वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ बात करते हुए वो इजी नहीं रहती, बिकॉज उन्हें रेजिस्टेंस मिलती है, डायलॉग मिलता है, बातचीत करनी पड़ती है। यही वजह है कि वो अब देयर इज इनहेरेंट कंट्राडिक्शन इन यूएस पॉलिसीज। सबसे बेहतरीन अरब स्प्रिंग की जो आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल आई कि जी हाँ वाकई डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई और बड़ी अच्छी हुई, वो ट्यूनीजिया है। सो डू यू नो दैट ट्यूनीजिया रिसीव्ड $900 million financial aid assistance from United States of America from 2011 till 2018. And in the same bracket, Egypt received $1.3 billion. प्रेसिडेंट सीसी की जो गवर्नमेंट है उसने, उन्होंने इतने दौर में इतने लिए, उसने उससे कम दौर में ज्यादा पैसे ले लिए, अमेरिकन ने सपोर्ट की। And it is not only in this particular context the role of US, of course, military leadership आ गई ना, आप अलग से भी हेडर बना सकते हैं एक्सटर्नल एलिमेंट का। And then a role of so-called brothers, particularly in the politics of Middle East. In the politics of Middle East, you would come across that UAE, Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, it's single group, they support General Sisi. A total of $45 billion assistance, because they were all skeptical towards rise of Egypt under Morsi. $45 billion की support financial assistance packages provide कर चुके हैं। So ये तो divide within का भी जो है वो issue है। So जनाब, these are the major hurdles. Now you can come up with other issues like absence of electoral culture, irregular practices of election maneuvering, rigging, then bad absence of good governance. If your so-called democracy, if your so-called democracy is not working, तो जनाब एक effective transition तो हो ही नहीं सकती, डेवलप ही नहीं हो सकती। अच्छा, अब यहाँ पर फर्दर आगे डिटेल में अगर आप लेके चलेंगे, जैसे ये सिविल मिलिट्री वाला पॉइंट है कि जी जहां जिन कंट्रीज में इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होते हैं वहां सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस नहीं होता, लेकिन जहां इंस्टीट्यूशंस यानी पार्लियामान वीक होता है वहां सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस हो जाता है। तो ठीक है, लॉजिकल सी बात है ये, लेकिन ये चीज हमारे टॉपिक के साथ नहीं, मे भी किसी और टॉपिक में काम आ जाए ये बात, हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो है वो ये बात
नहीं है कि क्यों होता है जी सिविल मिलिट्री रिलेशन में प्रॉब्लम। हमने तो ये बताना कि जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, हर्डल तो हमने वहां लेके आनी। Now whatever I am saying, it's not the end of the world, you can add points in it, लेकिन वो आप गूगल कर लें, रेफरेंसेस मैं भी आखिर में बता दूंगा कि ये रेफरेंसेस हैं जहां से आप भी देख सकते हैं, तो आप उसी में रहते हुए ऐड ऑन भी कर सकते हैं चीजों को। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने जो मैंने बता दिया आपने उसी को लेके चलना है, यू कैन इम्प्रूव इट। सो सिंस हमने लेवल ऑफ एक्विजिशन भी देख लिए, दो तरह से देखे, हमने हर्डल्स भी देख लिए, नाउ वी विल कम टूवर्ड्स हाउ टू अचीव democratic transition in Muslim world। कैसे करेंगे? So basically we are now try to analyze the fact that unless and until there would be no democracy, तो वो डेमोक्रेटिक रुझान डेमोक्रेसी में ही बढ़ना है। So crafting democracy in Muslim world, how to craft democracy, democracy craft कैसे की जाती है? So there are number of instances, inclusion of anti-state elements, उनको पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाए। दैट वुड लीड्स टूवर्ड्स मॉडरेशन। मुस्लिम वर्ल्ड में एंटी स्टेट या एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स वो आपकी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। डायलॉग करें और उनको इनकॉर्पोरेट करें पॉलिटिकल प्रोसेस में। सेकंड, theory of secularization। Now what is theory of secularization? As we have discussed earlier that purist and pluralist उनकी एक वाजिया डिवाइड है मुस्लिम वर्ल्ड में। सो एक ऐसा सिस्टम which is neither secular nor complete theocratic and the Islamic elements उनको रियलाइज हो कि neither they are winning, neither winning nor losing। And you have excellent example of Pakistan in this case। Pakistan is one of the best examples of theory of secularization। However, सिर्फ theory of secularization से ही तो पूरी democracy strengthen नहीं हो जाएगी ना, लेकिन ये एक effective tool है of crafting a democracy। Then acceptance by all। किस चीज की acceptance? Acceptance of elections, acceptance of separation of power, acceptance of non-interference, acceptance of behavior slash policies कह लें आप, policies कह लें towards women, children, overall you can say acceptance for fundamental rights आप यूं कह लें, but there must be acceptance। so हर ग्रुप को इंक्लूड करें, so theory of secularization ऑपरेट करें, acceptance for all
जनरेट करें। सेकेंडली, ensuring uncompromisable, ensuring uncompromisable, oh, compromisable support कह लें आप for stages of democratic transition. नेम इट, कोई आप उसको नाम अपने कॉन्टेक्स्ट में भी नाम दे सकते हैं, लेकिन असल बात क्या है? स्टेजेस इन मुस्लिम वर्ल्ड, respecting pan-Islamism. Do not reject it. Respect the idea of pan-Islamism so that कि जो आपकी डेमोक्रेसी के आइडिया को ओन नहीं करते ग्रुप, एटलीस्ट आप उनके साथ बैठने के काबिल हो जाए। Islamic pluralism. Now make sure Muslim majority countries, they may remain secular for 80 years, for 100 years, आप उनको रख सकते हैं, but the very deep in those societies, you would come across the sentiments of Islamic pluralism. So promote Islamic pluralism rather to press the idea. The more Islamic pluralistic sentiments वो बढ़ेंगे, तो उतना ज्यादा फिर आपका सेक्टेरियन टेंडेंसी भी वो लो डाउन होगी। Inclusive Islamic system effectively incorporated with values. Now values वो वेस्ट से भी आ सकती हैं, वैल्यूज ईस्ट से भी आ सकती हैं, बट वो इस्लामिक सिस्टम के अंडर है, तो जनाब वो प्योरीफाइड ही रहनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुस्लिम वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड, नॉन अरब वर्ल्ड, इनमें कल्चर का फर्क है, इनमें इनमें ऑफ कोर्स लैंग्वेज भी, इनकी पॉलिटिक्स की ओरिएंटेशन भी, लेकिन ये चीज कॉमन है कि पीपल आर लार्जली स्केप्टिकल टुवर्ड्स सिर्फ एक ही इंक्लूजन हुई हो, वेस्टर्न इंक्लूजन। आप टर्की में आपने 70-80 साल करके देख ली, लेकिन सोसाइटी मुकम्मल तो मोल्ड नहीं हुई। So effective Islamic system, inclusive Islamic system, effectively incorporated with values. Yes, it's quite true that आप पूरे का पूरा वेस्टर्न मॉडल तो नहीं उठा के लगा सकते, लेकिन आपकी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन भी रिलेटिवली डिफरेंट होनी है, लेकिन करनी तो है, अथॉरिटेरियन रिजीम्स में तो नहीं चलना। Working on tools of democratic transition. There are 4 tools of democratic transition. उन tools पे काम करें। Work on education. Education will bring cognition. Work on economic relief packages. It would generate opportunities.
work on the idea of join and rule, participatory, and most importantly, work on the idea of transition through transaction, a balanced economy, transactions economy. Let the people feel the difference, that how democracy is indispensable. So yes, democratic transition की जा सकती है Muslim world में. This very idea that there is no hope of democracy in Muslim world. No. Western key ideas of democratic transition को अगर देखें तो बात ठीक लगेगी. Principles of democratic transition को देखें तो ये बात ठीक लगेगी. Principles of political system को देखें तो ये बात ठीक लगेगी. But the point is, the hurdles which Muslim countries are facing, उनकी nature different है. West की nature different थी. So the point to ponder is that democratic transition Islamic values के context में हो सकती है. Possible है. It is not like that case में नहीं हो सकती. बिल्कुल possible है. हमारे पास theory of secularization की भी example मौजूद है. हमने दुनिया को दिया ये idea मुस्लिम वर्ल्ड. हमारे पास पैन इस्लामिज्म का आइडिया मौजूद है. हमारे पास एजुकेशन का आइडिया that how western and islamic values can be incorporated उनको कराया जा सकता. ठीक है, हमारे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, बट हम इनको डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल नहीं है. So this was the idea ji. As far as the sources are concerned, I would recommend 3 sources. First and the foremost important source, primary source, was Alfred Stephen, Democratic Transition in the Muslim World, most recent work. Then Giacomo Luciani, Economic Policies, to stabilize democratic transition. It's basically an article. And third, Jack Snyder, SN. A paradoxical tool for democratization. All sources are available online. मैंने कोई अलहदा से तो नहीं. So this is the way. अगर आपको 20 नंबर का सवाल आता है, अभी हमने 20 नंबर का सवाल खत्म नहीं किया. ये तो एक ओवरऑल एक आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में. लेट्स से वो आपसे सवाल पूछ लेता है, जनाब, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन पाकिस्तान, 20 नंबर का सवाल. वो आपसे कॉजेज पूछ ले कि क्यों नहीं डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रही. वो आपसे फ्यूचर पूछ ले, क्यों नहीं डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, कैसे होगी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन. सो ये दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास 4-4-5-5 आर्गुमेंट्स पीछे से मौजूद हैं. आपने उनको पाकिस्तान के साथ कोरिलेट करना है. दैट्स इट. कोई इतना बड़े रॉकेट साइंस नहीं है.
इफ यू हैव एनी इशू, एनी क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं इसको फिर अपलोड कर सकूँ यूट्यूब पे। बल्कि किसी का सवाल है तो पहले तो पूछ ले यार, फिर उसके बाद ही अपलोड कर देंगे। स्टेट जी। अच्छा, ये ना प्राइवेट मैसेज ना किया करो, एवरीवन किया करो, ताकि सबको जो है वो ये डायरेक्ट मैसेज जो है वो ना किया करो, एवरीवन का कॉन्टेक्स्ट किया करो। हाँ, ये जो ट्रांजिशन थ्रू ट्रांजैक्शन है वो भी स्टेजेस में है ना। असल में तो ये बात जो जुड़ी हुई है वो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। ये जो मैंने रेफरेंस दिया है, ये इसका सेकंड रेफरेंस लुसियानी वाला, इकोनॉमिक पॉलिसीज टू स्टेबलाइज डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, ये पूरा आर्टिकल ही इसी चीज पे है कि ट्रांजिशन थ्रू ट्रांजैक्शन, वो चार फेजेस उसके, फिर सॉरी तीन तीन हाँ चार फेजेस बनाता है। इंक्रीमेंटल डेमोक्रेटाइजेशन है, फिर उसमें ट्रांजिशन थ्रू रैप्चर है, फिर उसमें ट्रांजिशन थ्रू थ्रू आइडियाज एंड स्ट्रगल है। लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं, हमें तो एक एक की आइडिया लेना है और उसको हमने अपने टॉपिक का हिस्सा बनाना है। वो तो अपनी जात में एक पूरा ऐसे अलग निकल जाता है ट्रांजिशन थ्रू ट्रांजेक्शन का, तो उसकी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अवेलेबल है यार, जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ जी, रख देंगे। और जितना आपके पास, लोगों के पास कम टाइम रह गया अब तो, वो नहीं है ना कि आगे भी, लेकिन आगे लिखना चाहते हैं लिख लें। बल्कि मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे, जो पहली स्टेज पे वो कहता है इसमें इंक्रीमेंटल आपके पास डेमोक्रेसी फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन थ्रू ट्रांजैक्शन। फिर आपको कहता है वो जनाब ट्रांजिशन थ्रू रप्चर। फिर तीसरी स्टेज पे वो आता है आपके पास ट्रांजिशन थ्रू आइडियाज स्ट्रगल। और फिर कहता है चौथी स्टेज आपकी वो बन जाती है जनाब ट्रांजिशन थ्रू ट्रांजैक्शन। तो वो इस तरह चार स्टेजेस को लेके आता है। नहीं, जो इलेक्शन कमीशन बनाना या इस तरह के काम करना, ये ट्रांजिशन क्या है? बेसिकली ट्रांजिशन है रुझान। तो वो जो रुझान है वो क्यों नहीं है? वो एक इलेक्शन कमीशन बना के रुझान नहीं बनता ना। सिर्फ वो तो है कि एक प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को उसने कैसे हेल्प आउट करना है। यही तो अजर जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो यही तो कहते हैं कि जनाब डेमोक्रेसी और इस्लाम जो है ये आपस में क्लैश करते हैं। और जो वेस्ट के आइडियाज हैं वो यही साबित करते हैं कि क्लैश करते हैं। लेकिन जो हर्डल्स हैं वो कल्चरल है, और जो सॉल्यूशंस हैं वो भी कल्चरल है। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इम्पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल कल्चर लैक करता है, डेफिनेटली लैक करता है। अच्छा भाई, मैं इजाजत चाहूंगा, अब बड़ा टाइम हो गया। कल हम बड़ी डिटेल में देखेंगे जी एफएटीएफ को। और क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो शायद ऐसे में भी, और या फिर करंट अफेयर में तो आना ही आना है, लेकिन ऐसे में भी आ सकता है।